So this is the note to classify the decimal form of given rational number into terminating and non-terminating recurring type. ठीक है, इसको याद रखना है तुमको. क्या है नोटिस? नोटिस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर. हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो भी रहेगा रैशनल नंबर का, उसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. ओके, आफ्टर दैट इफ द प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5, अगर क्या आता है प्राइम फैक्टर्स 2 नहीं तो 5 आता रहेगा, ओनली 2 और 5, देन द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग. तो वो जो रैशनल नंबर रहेगा उसका डेसिमल फॉर्म कैसा रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा. ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व हियर, फॉर 5 द प्राइम फैक्टर इज 5, फॉर 64 द प्राइम फैक्टर इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 टूज आया ना, 6 टाइम्स आएगा 2. ठीक है, हियर 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स आएगा 2. ठीक है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग टाइप. इनका डेसिमल फॉर्म कैसा है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग फॉर्म आया. इफ द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5, अदर देन 2 और 5, फॉर एग्जांपल ये 36 के फैक्टर्स 9 4 36 होता है, 9 4 है ना, बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 4 is also not a prime number. So prime factors for 9 is 3 into 3 and for 4 it is 2 into 2. So total factors for 36 is 2 into 2 into 3 into 3. So prime factors are other than 2 और 5. 2 और 5 के अलावा आ गया ना, यहाँ पे 3 आ गया देखो, therefore it is non terminating recurring. Here 26 13 2 जा, 2 तो आ गया लेकिन 2 और 5 के अलावा आ गया, right? So it is non-terminating. 37 1 जा 37, it is other than, the prime factor is other than 2 or 5, then the decimal expansion is non-terminating recurring. Okay, so by using this we have to solve the practice set 2.1 question number 1. Now here question number 1, classify the decimal form of given rational number into terminating and non-terminating recurring type. By using this note we can easily answer this question. 13 upon 5, 2 upon 11, 29 upon 16, 17 upon 125 and 11 upon 6. Just find the prime factors of each denominator. Here the prime factor for 5, it is 5, for 11 it is 11, for 16 that is 2 into 2 into 2 into 2 containing 2 only. Okay, 125 that is 5 into 5 into 5, 6, the factors are 2 into 3. So here if you observe, then this is this one and this one, the prime factors containing 2 or 5 only. Okay, therefore the decimal form is of terminating type. So here we write 13 upon 5, 29 upon 16, comma 17 upon 125. Okay, these numbers are of terminating type. Terminating type because the prime factors, of denominator contains 2 or 5 only. Okay, and remaining numbers, that means 2 upon 11 and 11 upon 6 are of non-terminating recurring type. Non-terminating recurring type because the prime factors of denominator contains other than 2 or 5. other than 2 और 5. ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है इसको? एनी डाउट इन दिस? क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं आप लोग. सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स देखना है. अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5, ये दोनों में से कोई भी एक नंबर आता रहेगा, 2 और 5, वो टर्मिनेटिंग रहेगा. और अदर देन 2 और 5 आता रहेगा, ठीक है, फैक्टर्स के अंदर अदर देन 2 और 5, देन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring type. Okay, now we'll see the question number 2. Now the question number 2 from practice set 2.1 is write the following rational numbers in decimal form. Decimal form में लिखना है अपने को.
ठीक है. So here first example, total 5 examples are given, 4 examples are 5 examples are given. Out of 5 I'll show 2 examples here, and remaining 2 examples you have to solve. Okay, now here just we have to take division. We have to perform the operation of division. Here we have to divide 127 by 200. Just simple division is there in third standard, fourth standard, and we have studied how to divide two numbers. Okay, so here we have to take division of those two numbers. 200 127 divided by 200. So here from 200 it is not possible to divide 127, so we add we divide it by 0 first. Okay, so 200 zeros are, it is 0. So 127 minus 0, that is 127. After that take decimal point and add 1 0 here. Then 206 are 206 are, it is 1200. Okay, how much left? Take subtraction, 70 is left. Okay, here we took decimal point, so we can add 0 here. 200 3s are 203s are, it is 600, right? 700 minus 600, it is 100. Add one more 0 here, and 205s are, it is 1000. So 1000 minus 1000, it is 0. So you will get 127 upon 200 is equal to 0.635. So this is of terminating type. Okay, only we have to find the decimal form. So this is the decimal form, 0.635. Okay, now since here remainder is 0, so this decimal form is of terminating type. Okay, now in second example we have to divide 23 by 7. Okay, so from 7 we have to divide 23. 7 1s are 7 2s are 7 3s are 21. How much left? 3 minus 1, that is 2 is left. Take decimal point, add 1 0 here. 7 2s are, it is 14, right? 20 minus 14, it is 6, and add 1 0 here. 7 8s are, it is 56. How much left? 4 left. Add 1 0. 7 5s are, it is 35. How much left? 5 left. Add 1 0 again. 7 7s are, it is 49. How much left? 1, है ना? Add 1 0. 7 1s are 7. How much left? 3 left, right? Add 1 0. 7 4s are 28. Okay, and 30 minus 28, that is 2. कितना आएगा यहाँ पे? 2, and that 2 comes here in this step. यहाँ पे भी 2 ही आया हुआ था, right? So the decimal form for this 23 upon 7 is 3.285714 and dot dot dot, and that we can write as 3.285714 and this bar from 8 to from 2 to 4. This is bar. Okay, this is of non-terminating recurring type. Okay, so in this way remaining examples you have to solve. Okay, now come to next question, that is question number 3. Question number 3 is write the following rational numbers in P upon Q form. Okay, P upon Q के form में लिखना है. Now in previous question number 2, the P upon Q form is given, rational number is given in P upon Q form, and we write there, or we found there decimal form. Now here decimal form is given. From that decimal form we have to find the P upon Q form. Okay, so in this question also 5 examples are there. Out of 5, 2 examples I will show, and remaining 3 examples you have to solve. ठीक है, टोटल 5 एग्जाम्पल्स गिवन है, उसमें से 2 एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा, बाकी के 3 एग्जाम्पल्स तुमको सॉल्व करना है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज 0.6 बार. 0.6 bar. The solution for this is like this. Let we consider x is equal to 0.6 bar. We consider that number is equal to x, and therefore that x we can write as 0.6666 and so on. Say this is equation number 1. ठीक है, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.6666, है ना, रिकरिंग है. ठीक है, नाउ हियर आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट इज रिपीटिंग. कितना डिजिट रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, बराबर है. इफ 1 डिजिट रिपीट्स इन रिकरिंग
ओके, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 10। तो वो इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। इफ टू डिजिट्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ, अगर दो डिजिट रिपीट होते रहेंगे, देन मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन बाय 100। ओके, इफ थ्री डिजिट्स आर रिपीटिंग, देन मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 1000। बात समझ में आ रही? तो ये हिसाब से तुमको परफॉर्म करना है। सो हियर मल्टीप्लाई, सिंस वन डिजिट इज रिपीटिंग, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट 10x इज इक्वल टू, नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस 0.6666 बाय 10 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट decimal point goes to after one decimal, one digit, so you will get as 6.6666 and so on. This is equation number 2. तो डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा? राइट साइड में एक डिजिट क्रॉस कर लेगा वो, ओके, एंड यू विल गेट 6.6666. ओके, नाउ आफ्टर दैट subtract equation 1 from 2. subtract equation 1 फ्रॉम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट लेफ्ट साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड, सो यू विल गेट 10x माइनस x इज इक्वल टू, दिस इज 6.6666 माइनस डॉट 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 माइनस 0.6666 and dot dot dot. Okay, so 10x minus x, it is 9x is equal to, now here after decimal point, 0.6666 minus 0.66666, it comes 0, and 6 real part, that 6 minus 0, so 6 minus 0 is 6 only, and therefore you will get x is equal to 6 upon 9. Just simplify this, so 3 3s are 9, 3 2s are 6, and therefore x is equal to, it is 2 upon 3, and therefore x is equal to 0.6 bar, and that is equal to 2 upon 3. So this is the P upon Q form for 0.6 bar. Okay, this is the first example. Now the second example we'll take as 2.514 bar. 2.514 bar. Same procedure we have to follow. Okay, just see, let x is equal to 2.514 bar. Okay, that number we can write as 2.514 and so on. Okay, this is the value for x. Say this is equation number 1. Now here after decimal point, how many digits are repeating itself? 3 digits are repeating itself. So by which number we have to multiply this equation by 1? Okay, by which number we have to multiply equation 1? So by multiply, yes, multiply equation 1 by how many digits? 3 digits are repeating, so by 1000. अगर एक डिजिट रिपीट होता रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. इफ 2 digits are repeating, multiply the equation by 100, and if 3 digits are repeating, then multiply equation by 1000. So here we multiply the equation by 1000, so you will get 1000x is equal to, now we have to put that decimal point है ना after 3 digits on right hand side, on right side. Okay, so you will get 2514 point, okay, then 514 and so on. समझ में आ रहा क्या? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस आगे जाएगा? 3 प्लेस, क्योंकि 1 के आगे 3 जीरोज है, जितने जीरोज रहेंगे उतना डिजिट आगे जाएगा. अगर 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 में 2 ही जीरो रहते तो 2 डिजिट आगे जाएगा. ओके, सो ये 3 डिजिट आगे जाएगा, ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड. ओके, सो इन दिस वे से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये रहेगा इक्वेशन नंबर 2. आफ्टर दैट subtract equation 1 from 2 में से उसको subtract करेंगे. So you will get 1000x minus x is equal to 2514.514 dot 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 minus x value for x is 2.514
एंड सो ऑन। ठीक है, सो 1000x माइनस एक्स दैट इज 999x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0.514 फाइन 0.514514 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट बाय 0.514514, तो उसकी वैल्यू आएगी 0। ओके, एंड ऑन रियल पार्ट इट इज 2514 minus 2, so you will get 2512. Okay, and therefore x is equal to 2512 divided by 999. So this 999 is in multiplication, on right hand side it comes in the denominator, and therefore x is equal to 2512 divided by 999, and sorry, x is equal to 2.514 bar, that is equal to 2512 upon 999. ठीक है, so in this way you have to solve question number 3 from practice set 2.1. तो ये हिसाब से तुमको practice set क्या करना है, solve करना है. So remaining examples you have to solve in the example in your textbook. Okay, sorry, in your notebook. On tomorrow we'll see the next part from this chapter. Thank you.